Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Banknifty and Finnifty. Coming to the Banknifty charts, I'm not covering monthly because we have already discussed it in detail in the multi-time frame analysis which we covered during this weekend. You can go and check Saturday video. We are covering this weekly. Why? Because I forgot to explain this particular chart in the video format, because when I was making the thread form, then I realized there was this symmetrical triangle under formation. In case of a symmetrical triangle, there could be an equal chance of a breakout or a breakdown, as against where in case of ascending triangle, usually we look for breakouts, and in case of a descending triangle, we look for breakdowns. So this is the basically an ascending, basically a symmetrical triangle where prices are trying to converge, and the prices will go narrow, and then finally we get a breakout or a breakdown. So the prices are already narrowing down now, as you can see from this particular price action. Now the moment we break above this particular zone with a good candle closing, it shouldn't be this kind of a candle closing. We need a good candle closing. Once that is done, at least we can see 3660 points on the upside. Okay, so typically I would say we want basically a closing above 47,850 roughly. Around that zone, above this particular zone, we need a clear candle closing above this zone, and that too on a weekly time frame, because we are looking at the weekly time frame charts. Okay, in daily time frame, this rising channel is still under formation. So whatever this particular sell-off had that we have seen on Thursday was more of a expiry related move. Especially that move was coming from the Nifty expiry. Okay, so that entirely this got negated because the opening itself was a mega gap up opening, and in case if we would have closed at the highest point, then it would have been more or less a flat opening. But just because we saw this kind of an expiry related move in case of Nifty, and Bank Nifty also followed the same, that's the reason we are looking at a major gap up today. And Bank Nifty very well, held up its low of 47,400, and today again we are getting a good closing of 47,578 after a very long time. Of course, now what we can see candle by candle, if you see, it's completely a sharp run up again. Now remains to be seen whether it will wait for a few, like 1 or 2 days, and then give another weekly breakout towards Thursday or Friday, especially because Friday it's important because we have an RBI policy as well. Now let's check on the 15-minute time frame, because we want to build a trade plan for tomorrow. So what I can clearly see is basic formation of a pole and a flag. I'll just draw it here. This is the pole, and I can see basically two types of flags, and I'll show both of it. This is one type of a flag wherein we can see this kind of a channel, and then there is another type of a flag that is under formation, and I'll show you that as well. It's somewhere like this. Okay, so both these flags are valid. So what I would have given the target for this particular flag of this falling channel, because we have got some sort of a breakout here, but I will wait for this candle, I'll wait for this kind of a flag pattern to break out, and then we will look for targets. Okay, basically it's no rocket science. Basically whatever this pole length is, that is the target we'll get. So roughly, if I have to measure it out, then I'll just measure that out. Roughly 600 points move that we are looking out, but then we need a clean breakout above this particular flag. So for tomorrow, if at all we open flat, until the time we don't break this level of 47,400 to 47,440, these dips will be utilized to buy. Yesterday also I had mentioned it's clearly a buy on dips market, so you could actually utilize this kind of dips to go long. If at all prices come near here, I will look for any bullish reversal pattern, and I'll try to go long here. Let's say if we open flat and we try to just consolidate here, and immediately we try to break above this level, above this 47,600, we get a good closing, then again I'll go long. Or as I mentioned, it is 600 points, so I'll try to go long, but I will keep an eye on these kind of resistance also, whether the price action is making some sort of a resistance here. So 600 point is one thing, but I will always respect some sort of a support resistance levels as well. So I will look at these levels whether prices are taking any sort of resistance. Let's assume we open with a mega gap up. See, today what happened, it was a mega gap up, and that's the reason prices didn't had any much more room left to move upwards. So if we open somewhere around this zone, then it might so happen that it will come down and then
remain volatile in this kind of a range, or at the most it might come till this kind of a range 47,500. So if it opens gap up, then it becomes very difficult to get any directional trade. Best opening is if it opens flat. In case of a gap down opening, now whenever there is a gap down opening, all this entire gap will act as a support. It could take support from anywhere. If it opens with the gap down, the entire opportunity would be utilized by the bulls to go long. So it's very clear, it's basically a buy on dips market. As you can see, we are doing this higher high higher lows kind of a scenario. Let's go and check the Nifty. Coming to the Nifty charts, what we can see on the daily time frame, we actually made an intraday all-time high today by 2 or 3 points. That's about it. We touched 22,529.95 on intraday basis, but the closing is more of a doji. So on closing basis, if you see, Bank Nifty gave a good closing, but you have to also remember that Bank Nifty is still quite away from its previous all-time high. Its previous all-time high was 46,800, and we got a closing of 47,578 today. Whereas in case of Nifty, it actually already touched its previous all-time high as well. So now let's go on 15 minute. If you guys remember, we discussed about this particular inverse head and shoulders. We made a fresh inverted head and shoulders pattern, and the two targets were, the first one was this 22,457, which got achieved today itself, and the second and the last final target is 22,700. Now these are the supports and the resistance. I'll just take this off, then it will be clean. We do not have much to talk about because it's already trading near its previous all-time high, and it actually made a fresh intraday all-time high as well. So this is our immediate support. If at all we open flat, again the moment we break above this particular level, which is 530, I have written here yesterday itself, 22,500, 530. The moment this level gets taken out, we will go long, because then it's a fresh breakout. Any dips up till this level will get bought into, because it was a mega gap up. Again, this gap will act as a support. Dips should be bought into, and if at all, like for whatever reason, let's say in case of a US handover or anything, because of a bad US handover or something, if you get any sort of an opportunity where the market opens around S1 or S2, especially this this I have written it as S3, however it is S2. I'll make the changes of S1, S2, S3. Don't bother about this, just remember the levels, that's all. If at all we get some sort of an opening here, then look for bullish opportunities, because we are in the market of buy on dips. For any reason you get some sort of a dip, just wait for this bullish reversal pattern to be seen there, and post confirmation you can go long. That's it for Nifty. Now let's quickly go and check the Finnifty. Coming to the Finnifty, what you can clearly see is there is this neckline, and if you remember our support and resistance video, buyers are shifting their house upside every time, which means the buyers are in total control. And for a lot of you, this would be a cup and handle. For me, this is a VCP pattern, 2T VCP, and then there is a clear breakout today. I will consider this as a breakout of this particular ascending triangle, and let's see the targets for this particular ascending triangle. As per the ascending triangle, we got these two targets of 21,525 and 21,832. Now these are all so many patterns out there that everyone wants to learn about all these patterns. I'm pretty sure you'll have to have some patience, because we are going to come up with more such learning videos. But meanwhile, what you can do, you can actually go and check out our learning videos that we have already released. On the 15-minute time frame, this was basically a resistance, which I just took it off now because it was basically a gap, and that was acting as a resistance. Now just like Bank Nifty, in case of Finnifty also, there is basically a flag pattern under formation. We haven't got any breakout as of yet. If at all we open flat, the moment we cross about this particular high, like which is about 21,250, we are going to go long. And let's say for whatever reason, if we open with a mega gap up, then if at all market tries to come down, now at that point of time, just remember this entire zone will act as a support. If at all it tries to come down, just look for any bullish formation here. After opening with a gap up opening, if at all it tries to come down initially, then just don't blindly short the market, because the overall trend of this market is still uptrend. Now where there will be a problem, let's say if market opens with a gap down somewhere around here, then obviously all this zone will act as a support, and this zone will act as a resistance. Then triangle might play out, but I'm still not too sure about the triangles. The best part would be if it opens flat or a gap up, then we will be aligning our trades towards bullish side. For our Hindi audience, I'll finish it quickly. Okay, in case of Bank Nifty, हमने ये मिस किया था, एक symmetrical triangle formation हो रहा है.
अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है क्या नहीं है ये सब हम जब भी हमारे एजुकेशनल वीडियोस लेकर आएंगे उसके टाइम पे हम बात करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिएगा कि इसकी बेसिकली इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि असेंडिंग में कैसा होता है कि हम ब्रेकआउट्स को तवज्जो देते हैं, या डिसेंडिंग में ऐसा होता है कि हम ब्रेकडाउन्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। बट सिमेट्रिकल जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसी तरफ उसका कंटिन्यूएशन रहता है। हम लर्निंग वीडियोस में डिटेल में सीखेंगे वो क्या है करके। तो अभी हमें ये दिख रहा है कि जब भी ये इसके ऊपर हमें अच्छी क्लोजिंग मिलनी चाहिए, और वो भी डेली पे नहीं, हमको वीकली में चाहिए। मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग को हमको पता चलेगा कि ये वीकली में इसने ब्रेकआउट दिया या नहीं। तो फ्राइडे को हम जैसे ही हमको ब्रेकआउट का कॉन्फर्मेशन मिलेगा हम पकड़ कर चलेंगे कि 3650 पॉइंट्स की अपमूव आ सकती है बैंक निफ्टी में अलोन। ठीक है, अब 15 मिनट में फटाफट देख लेते हैं। 15 मिनट में एक्चुअली एक फ्लैग की फॉर्मेशन तो हो रही है। ये फ्लैग का जो हाइट है ये 600 पॉइंट्स है। तो अगर कल मान लीजिएगा कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है और मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है और अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है, हमको अच्छी ब्रेकआउट कैंडल मिल जाती है, मैं ट्विटर पे पोस्ट करती हूँ टारगेट्स वगैरह, तो आप वहां पर अगर एक्टिव हो तो आप वहां पर से रेफर कर सकते हो, और अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो। और जैसे ये ऊपर जाएगा तो फिर आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर बोला कि 600 पॉइंट्स की, मान लीजिएगा आप यहाँ पर लॉन्ग जाते हो और आप बिल्कुल भी ब्लाइंडली फॉलो करते हो उस चीज को, तो वो रॉन्ग है। बिकॉज आपको ये भी रेजिस्टेंस को देखते रहना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ से रिजेक्शन आ रही है तब आपको बुकआउट करना पड़ेगा। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो सबसे बहुत मतलब इट्स द बेस ऑफ एनी टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब कुछ बाद में। मार्केट अगर कोई चीज को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। इसीलिए अगर आप देखते रहोगे, मैं हर रोज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडाइसेस के पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स नहीं पता हो, अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे भी ट्रेड नहीं लेना आता हो, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, फिर भी यू कैन मेक मनी इन दिस मार्केट। दैट्स द रीजन, फर्स्ट यू हैव टू रेस्पेक्ट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद आप ये फिर 600 वगैरह प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट ये इसमें पोटेंशियल है 600 की। अब ये कल की कल आएगी नहीं आएगी आई डोंट नो। तो आप लोगों को ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर नजर बना के रखना है कि यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस आती है तो आपको ट्रेल करनी पड़ेगी आपकी प्रॉफिट्स को टाइटली। तो ये तो हो गई फ्लैट अगर ओपन होती है तो। अगर गैप डाउन ओपन होती है फिर भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है ना, ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपमूव में है और यहाँ पर एक गैप है। अब वो एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट, तो यहाँ पर कहीं पर भी से सपोर्ट लेके घूम सकती है। तो इस केस में आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी में जब हम आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं कर सकते, हमको वेट करके देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसा होता है। शॉर्ट की तो कोई बात ही नहीं बनती है जब तक मेरे हिसाब से तो कोई मेजर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी 46,200 के नीचे है। उसके ऊपर उसके पहले तो है भी नहीं, और आप अगर करते भी रहोगे तो स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, वरना प्रॉपर जो शॉर्ट अगर बनता है तो 46,200 के नीचे बनता है। और वैसे देखा तो 45,800 है, बट 46,200 इज द नियरेस्ट इन डेली या 15 मिनट आई वुड से। तब तक कोई अभी तक तो शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है। और अगर हम गैप अप से खुलते हैं, अगर यहाँ पर से खुलते हैं तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा दिस जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, ये 45,500 45,560 वाला जोन है ना, ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगी। तो जैसे ही नीचे आएगी यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिले तो आप लॉन्ग जा सकते हो। फिर सिंपल है, तीनों केसेस में लॉन्ग ही जाना है आपको। जस्ट दैट आपको वेट करना है। कोई बुलिश फॉर्मेशन जैसे फ्लैट ओपन हुआ तो आपको वेट करना है, ये कैंडल का हाई निकलने दो। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है और स्टार्टिंग में अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और अगर यहाँ पर गैप डाउन से ओपन हो रहा है तो वेट फॉर द प्राइस एक्शन की मार्केट किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में बड़ा ही सिंपल है। आज अगर आप देखोगे निफ्टी ने वापस इंट्राडे में एक फ्रेश एटीएच बनाया 2-3 पॉइंट से। हालांकि इसकी क्लोजिंग डोजी की तरफ ही है, बिकॉज जहां पर ओपन हुआ वहीं पर ही क्लोज हुआ है। छोटी सी रेंज में थी, ये इमीडिएट सपोर्ट है और ऐसे तो कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, बट ये जब भी हमें 530 के ऊपर जाते हुए दिखेगा तब हम इसमें फिर नए बुलिश पोजीशंस बना सकते हैं। गैप डाउन खुलेगा अगेन, ये दिस जोन विल एक्ट एज अ सपोर्ट, तो कि शॉर्ट करने में कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। तो फ्लैट अगर ओपन होता है और जैसे हम 22,530 को ब्रेक करते हैं वहां पर आप लॉन्ग जा सकते हो, या नीचे की तरफ अगर पहले आता है और ये सपोर्ट जोन पे कहीं पर भी अगर आपको बुलिश रिवर्सल दिखता है तब भी आप लॉन्ग जा सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप अप से खुलता है फिर ऑब्वियसली आज की तरह ऐसा होगा, ट्रेड्स नहीं मिलते। बिकॉज देखो, अगर मार्केट इतनी बड़ी गैप से खुलती है
उसके बाद मार्केट के पास जगह नहीं हो और ऊपर जाने के लिए, फिर वो वोलेटाइल या साइडवेज होके रह जाती है। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब चलते हैं हम फिन निफ्टी के पास। फिन निफ्टी में तो मेरे हिसाब से एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। मार्क निर्विनी की बुक्स पढ़ते हैं उन लोगों को तो पता होगा, ये वीसीपी पैटर्न भी है, 2T वीसीपी। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल, अगेन इट्स अ बुलिश फॉर्मेशन। तो इसका ब्रेकआउट आज हमें मिल चुका है और इसके टारगेट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। कल के कल आएंगे नहीं आएंगे दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। अब हम 15 मिनट में जाके देखते हैं, बट ओवरऑल रुझान ये है कि ये बुलिश की तरफ है, क्योंकि ये जो HDFC बैंक की जो गैप डाउन के बाद वाली जो गैप के अंदर ये फर्स्ट टाइम इसने क्लोजिंग दी है आज। अब चलते 15 मिनट में। जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन है, हालांकि कोई ब्रेकआउट नहीं है फ्लैग की। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हम इसमें कर सकते हैं प्लान। फ्लैट अगर ओपन होता है जैसे ही 21,210 से 21,240 के ये पर्टिकुलर जोन को जैसे ही क्लियर करता है हम लॉन्ग जा सकते हैं। और मान लीजिएगा कोई कारण बड़ी गैप अप से खुलते हैं हम, और अगर फर्स्ट इनिशियली आपको सेल ऑफ दिख रही है, आप शॉर्ट मत कीजिएगा। ये जो जोन है 21,200, 210 वगैरह, यहाँ पर जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा फिर आप बुलिश रिवर्सल के लिए ढूंढिएगा। जैसे ही मार्केट रिवर्सल लेगा आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो, ठीक है। और थर्ड केस, अगर हम लोग कोई मेगा गैप डाउन से खुलते यहाँ पर, फिर यहाँ पर सारे सपोर्ट्स है और फिर यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी, फिर फिन निफ्टी में साइडवेज होने के चांसेस है। मतलब बहुत लोग फिर ट्रायंगल या स्ट्रैडल मार के उसको साइडवेज के हिसाब से वर्क कर सकता है। ये 3 सिनेरियोस हमने फिन निफ्टी में भी डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपको ये सब चीजें समझ आई होगी, और अगर आपको हमारी एनालिसिस यूजफुल लगती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।